Hi, I'm Dr. Vandana Jain. I'm a senior consultant and unit head, Gynae Oncology at Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center, Delhi. Today I'll be speaking with you about ovarian cancer since we are celebrating World Ovarian Cancer Day on 8th of May 2024. ओवेरियन कैंसर एक बहुत ही लीथल कैंसर होता है जो हमारी फीमेल्स को अफेक्ट करता है. यूजली with increasing age, the risk of developing ovarian cancer increases. However, no age is bar. Even younger girls, even as young as they are getting inflicted by it. So ovarian cancers can be of different types: germ cell tumors, epithelial ovarian tumors, and they affect different age groups. Germ cell tumors usually young girls में होते हैं up to 20 years of age, and epithelial ovarian cancers usually 50s के बाद होते हैं. But even we are seeing patients as young as 30s, in their 30s, to be inflicted by ovarian cancer epithelial type. So no age is bar. The common symptoms can be very non-specific, like blotting, abdominal distension, gastritis, dyspepsia, urinary frequency, constipation or diarrhea. So these symptoms are very vague and one can easily ignore them. Even your physician can ignore them, saying that it is just gastritis. They can prescribe you certain antacids and it can be ignored. So one must be very vigilant about these symptoms, and if these symptoms are present for quite some time and they are very disturbing to you, like it is affecting your daily routine, then please go and get yourself checked because you can be harboring an ovarian cancer. Ovarian cancer usually sporadic होता है. Only 5 to 10% cases में ये familial हो सकता है, यानी grandparents like that. So only 5 to 10% में familial risk है. तो don't think कि हमारे घर में तो किसी को कैंसर हुआ नहीं है तो हमें नहीं हो सकता. So don't ignore your symptoms please. And then treatment for every cancer is possible. Don't think कि now you have an ovarian cancer and you're written off. We have treatment for every stage of cancer, though the chances of surviving are more if you are diagnosed in early stage. तो अगर आप स्टेज 1 और 2 में डिटेक्ट हो जाता है आपका कैंसर तो आपका सर्वाइवल बहुत हाई होता है बिकॉज वी कैन ट्रीट इट बाय सर्जरी एंड इफ रिक्वायर्ड कीमोथेरेपी एंड योर सर्वाइवल इज वेरी गुड. बट वंस इट क्रॉसेस दैट, लाइक इफ यू प्रेजेंट टू अस इन स्टेज 3 और 4, देन ऑफ कोर्स डिक्रीज. सो उसमें हमें भी मुश्किल होता है ट्रीट करना, दो स्टिल वी हैव ऑप्शंस फॉर यू. ऐसा नहीं है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते आप 3rd या 4th स्टेज में आ गए हो तो. बट to get early detection, you have to be aware of your symptoms because this is one cancer, though it is very lethal, we don't have any good screening test for it. कोई अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है ही नहीं है. CA-125 का भी कोई खास रोल नहीं है एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, अल्ट्रासाउंड का भी कोई रोल नहीं है, CT का भी कोई रोल नहीं है. तो स्क्रीनिंग से हमें अर्ली स्टेज नहीं पता चलता है. यू नीड टू नो योर सिम्टम्स एंड कम टू द डॉक्टर व्हेन दे डिस्टर्ब यू, एंड मे बी दैट कैन हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली ट्रीटमेंट. थैंक यू.